Yes, we are live on YouTube now. So we will start the procedure. Welcome, सभी parents, principal, guest speakers, Harish sir, Rahul sir, and students. Behalf of VM Tutorials, Aditi Educare, and नालंदा ग्रुप ट्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेशन है दैट इज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट वीक अनाउंस की थी। और ये अनाउंस करने के बाद एक सब जगह हड़बड़ाहट मच गई है पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, कि एक्चुअली होने वाला क्या है। इवन मीडिया पे बहुत सारी आधी खबर दिखाते हैं, वहाँ पे मीडिया पे आ रहा है कि 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे सर इस साल तो बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं, तो फिर हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। एंड इवन बाकी भी बच्चों को, पेरेंट्स को ऐसे लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, और बहुत सारा कंफ्यूजन है। ये कभी से प्रोसेस स्टार्ट होगी, एजुकेशन सिस्टम कैसे होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि 12th तक बोर्ड होगा या नहीं होगा। जैसे बोला है अप टू 5th स्टैंडर्ड मोड ऑफ एजुकेशन मदर टंग रहेगा, उसके बाद अलग अलग, यानी बहुत सारी सिस्टम चेंज होने वाली है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे भी नहीं है कि इम्प्लीमेंट कभी से होने वाला है। सो बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारे क्लास ओनर हो या स्कूल टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, किसी के पास प्रॉपर इसके बारे में कहीं पे भी न्यूज नहीं है। तो इसके वजह से कहीं पे तो थोड़ा डर का माहौल है कि क्या होगा हमारे बच्चों का। जिन पेरेंट्स है वो थोड़े डरे हुए हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा अगर ये एजुकेशन पॉलिसी आ गई। क्योंकि अब तक की हिस्ट्री है, जब भी कुछ भी नया चेंज होता है तो सबसे पहली या दूसरी बैच बहुत सफर करती है। तो इसी के लिए आज हमारे बीच है अतुल बेंगरी सर, जो इसके बारे में हमें बताएंगे। बट बिफोर दैट मैं सर का इंट्रो आपको, ऑफिशियल इंट्रो है। अतुल बेंगरी सर जो हमारे बीच में, ही इज फ्रॉम पुणे एक्चुअली। Atul Bengari Sir is an educational specialist over the 21 years of experience across various facets of design, implementation, and training in K2, K12 to higher education segment. Again, he created and executed students' internet world in partnership with the government of Karnataka, जो जिसको 12 लाख स्टूडेंट्स ने 3 इयर्स में कवर किया था। His employability skill workshop for the 11,000 students in the southern state of Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh during the 2010 and 11. He conducted over 33 NEP National Education Policy workshops and trained over 800 plus teachers. Effective learning methods of workshop, he taken that one, covered over 3,000 10th grade students in 2019. He conduct over 15 parents awareness program and 25 students awareness program. He conducted entrepreneurship awareness and development program for budding entrepreneur under the aegis of EDP Ahmedabad. He is academic associate with PhD scholars at Savitribai Phule Pune University under the computer management facility. He developed a curriculum on the project management for the MTech and MCA at MIT Academy of Engineering Pune. Curriculum design and chairman. He is a curriculum design and chairperson BOS of healthcare management as an elective subject of MBA under the Pune University. He is professor of MCA and MBA department at Vidya Pratishthan Institute of Information Technology VIIT Baramati, and lot of more things. Again, his positions: he is a vice president and director of Acumen Today Private Limited Pune, regional head of strategic projects and smart cities Dell EMS, director program operation and alliance at T8 Solution Private Limited Pune, industrial manager Intel Technology Private Limited Bangalore, implementation manager at Siemens Infosys Private Limited, software engineer and chief faculty at CMS Computer Limited.
His educational qualification: he is PhD scholar at the Savitribai Phule Pune University, MBA in Marketing from the Symbiosis Institute of Management Studies, MS in Software System from BITS Pilani, PG in Computer Application from University of Mysore, and BE from Sri Jayacharya College of Engineering, Mysore, and achievement of 4th rank in University of मैसूर। ऐसे सर के अभी तो उनका बायोडेटा मैं देखूंगा तो और 2 पेज है। सो इतना तो सर, इतना सुन के ही आपके बारे में यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होगी कि जो हमारे बीच अभी है आप, ये कोई ऐसे नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर है। और सर आप हमें टाइम दे रहे हैं, आपका नॉलेज शेयर करें, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका थैंक यू कहता हूँ। और सर, ओवर टू यू। Thank you, Mahesh sir, and good morning to all of you. Happy Sunday. Good 1.5 hours that we are going to spend for getting to know not only about the National Education Policy 2020, but also on what is in it for all of us. Why is this so very important? How is it going to affect us? How is it going to affect our children? How is it going to affect the future of this country? There have been long debates for many years in terms of what are some of the challenges and issues of our education policy or our education system itself in India. Now that this policy is out, we will definitely see what is in store and what is to be done as individuals, whether you are from a school, whether you are a parent, whether you are a teacher, an educator, or a student. We all need to work together. We all need to see how this will benefit each one of us by participating and acquiring the necessary skills other than what we are already been doing. So I will get into the details of what the goals of the NEP are, the importance of NEP, and the basic objectives of the national education policy that has been in debate for almost 2 years now, and thankfully we are seeing it getting implemented. We were hopeful that this would have got implemented from this academic year itself, but we all know that we are in a situation which is unprecedented and which is unknown. So we don't have a choice, but we'll have to wait. So having said that, this introduction is already over, so I will not go into it. A big salute and thanks to all the COVID-19 warriors, which includes you, me, the ones who are seen, the unseen, the ones who are on the field, the ones who are at home, everyone. So this is our tribute to our warriors, which includes the home front warriors and the silent warriors whom we are addressing today, who are the teachers, the social workers, educators, and not to forget, our children, our kids are the ones who are the warriors who have actually not let any one of us down. So with this, I would just little bit talk about what Acumen today is all about. We are an educational consultant, and we have had some good recognition to some of our initiatives that we have been doing for the last 2.5 years. Little bit on the education, because education is not just about sending children to school, not just about sending children to a class, not just about scoring good marks. It's not just about getting a rank. It is much more than what it is. So I would definitely want you to just pay some attention here in saying that Benjamin Franklin and some of the well-known educators of the world, they have been saying that an investment in knowledge pays the best interest. It's not education, it's about knowledge, it's about skills. And Albert Einstein, who is the best known Nobel laureate in the world as of now, he says education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Now, why am I talking about all this? I will relate it and correlate it to
to what the education policy talks about. It has the power to change the world. It has the power to change all of us. So, good start to what this is all about. And I'm feeling proud and honored to actually say that Acumen today, as a company with focus on education, is completely in alignment with the national education policy. In 2019, it was a draft, and 2020, it has got implemented. So we are hand in hand in creating a smarter tomorrow. When we say smarter tomorrow, it's basically for our children, for our students. And we have to work together. So that is what Acumen today is all about. But let me just highlight the initial draft document, National Education Policy 2019, is a 484-page humongous document which has been researched and gone into the details of the challenges, the gaps, and the nuances as to what changes need to be made. It's aligned with the 21st century skills. It is also about focusing on learning and also making students future ready. The education or the skills, the abilities, the thinking process that gets instilled in the students now would make them future ready. And nobody knows what is in store for the future. So the right education to create the right employability and to create the right entrepreneurial spirit, enterprising spirit, is what this complete education policy entails. It talks about a holistic approach starting from your initial kindergarten, much below kindergarten also, to higher studies, which is going beyond PhD into R&D and research. So first and foremost, what has changed is that Sir, maybe some internet connectivity issue. So everyone please stay. Atul sir, maybe some internet, yeah. Sir, Atul sir, just unmute yourself. Atul sir. yes, there was a power outage, so it just went off. Yeah. I will resume. Sorry for this interruption. वीडियो चालू नहीं हो रहा है सर वीडियो Yeah. Just Rahul, just mute all. Just a minute. Okay, so we are back. Okay. Okay, so you're able to see my screen? Yes, One sir. of you can confirm, please. yes sir Yeah, okay. So if you see what has changed on the left-hand side, you're seeing the previous academic structure. I would start with this and then go into the details. So the previous academic structure talks about 10 plus 2, which means to say that 10 is like starting from grade 1 to grade 10, and then plus 2, which is your 11th and 12th. What has changed now is they've gone 3 years below. 3 years below 6 years means to say that the education, the formal education needs to start at the age of 3. So the first stage, which is of 5 years, so the 10 plus 2 has been divided, has been broken
into 5 plus 3 plus 3 plus 4. So these are the number of years that formal education has to be imparted. And how that starts is from the age of 3 to age of 8 is called the foundational years of education. Now, these foundational years would focus on the fundamentals, because there have been instances in India that many students go to grade 1, that is first standard, without even knowing the basics of language, numeracy, and the thinking process that is needed. So these changes would help in not only learning the necessary required foundational fundamental learning and skills and abilities and passion, it would also help in shaping them up as we go higher. So grade 3 to 5 is again called the preparatory stage. So when your foundation is strong, you can prepare really well for the challenges of the middle layer and the secondary schooling. I will go into these details, but keep this at the back of your mind that the structure, which was 10 plus 2, has been broken down and extended it below the age of 6 to the age of 3. So it is 5 plus 3 plus 3 plus 4 before you would get into any formal degree or university kind of a scenario. So when such structural changes are happening, naturally the complete way of educating, teaching, learning would change, and examinations also. That doesn't mean that there will be no examinations. The examinations will be there. These examinations are called as assessments rather than examinations, because the way our education system as of now is that the whole of education system is revolving around examinations. And examination is all about scores, about your grades and your marks. Perfectly fine. Marks are important, but marks alone are not important. Now just imagine we are in a situation of this kind for the first time in anybody of our life, that we have experienced such a thing. Where have all the students who have scored 90, 95% and above, where have they all gone vanished? If they were so very good in learning and so very good in scoring so high marks, they should have come out with a solution of solving this problem which we are facing for the last almost 6 months, isn't it? Now that is the issue. Now the whole world, it's not just about India. I'm talking, this is a whole world problem, that anybody who's scoring so high needs to know that there needs to be a solution that we should be finding out, if not immediately, but at least a month, after 2 months, after 3 months. No, we are in such uncertain days that I need to remind that the rank holders and the so-called 90 plus, 95 plus class, they need to come out with some research and development and see that the human race doesn't face such difficulties for so long. Okay, now keeping that at the center of it, if you see, the whole of education policy is designed using the 21st century learning metrics, what you're seeing here. Now this is broken down into the foundational fundamental aspects and then the application of it, which you see in the 4 colors on the top. Atul So sir, what they're saying is, Atul yes, sir, one anybody? request, just mix Hindi and English. Okay, yeah, sure, Thank you, good. Yeah, thank you, sir. Thank you. Okay, so okay, when I get into the flow, it is good, sir. Thank you for pointing that out. I can even talk in Marathi, I can even talk in Gujarati, but we'll stick to English and Hindi so that it will cover everyone. Okay. So हे जे पॉलिसी डिफाईन झालेलं आहे, ह्याच्यात मेन कॉम्पोनेंट्स जे आहेत ते आहेत फोकस ऑन लर्निंग, म्हणजे शिकवण्यावर नाहीये, शिकण्यावर आहे. म्हणजे हे सगळं कोणावर आलं, शिक्षकांवर जास्ती भर नाहीये.
शिक्षक जे काम करतायत ते चांगलंच करतायत, पण शिकतंय कोण? जो स्टुडंट आहे त्याला कसं शिकायचं, कुठल्या पद्धतीने शिकायचं आणि काय शिकायचं, हे या पॉलिसीमध्ये खूप छान रीतीने डॉक्युमेंट केलेलं आहे. So again, going back to what we were talking about, the 21st century skills. 21st century skills is a word which is being used for almost 10 years now. There are countries who have adopted this very fast, and they are now leading in terms of research, development, innovations, and new creations, whether it is in IT, whether it is in medical, whether it is in healthcare, whether it is in defense. We are catching up. India has got all the potential. India has got all the resources, and India has got all the reasons to be a world power, mind you. And we have been world power for long enough. It's only that we have been doing it for ourselves. असं नाही की आपल्याला काय आपल्यामध्ये क्षमता नाहीये, असं नाही की आपल्याकडे काय बुद्धिमत्ता नाहीये, असं नाही की आपल्याकडे ती जनसंख्या नाहीये जी डेव्हलप नेशन कडे आपल्याला नेऊ शकते. Definitely it is possible. For that we need to align with what is needed, not just at a city level, not just at a state level, not just at a country level, but at a global level. आता मला सांगा, आपली पोरं जे आता शिकतायत, आता 1ली ते 10वी मध्ये कुठेही असले, म्हणजे इवन इफ दे आर इन 10th स्टँडर्ड टुडे, their competition after they finish their 12th and after they finish their degree is not just limited to the school or to that city or that district or state or country. The competition is at a global level. We are in a globalized environment. Globalization. India opened up in 1991. Very good. But have we capitalized on it? Are we competing with the best in the world? Probably yes, but most of it no. Why? Because our education system didn't align with what is needed for us to compete with the students of South Korea, students of Singapore, students of Europe, students of even China for that matter. It's a big, big threat for our next generation. We have survived. We have done what we can. We have to look at how we enable our next generation, which is our student, to be really, really good at all this. So what we need to create, पहिल्यांदा काय करायचंय, आपल्याला लर्निंग एन्व्हायरमेंट्स क्रिएट करायचे. Atul sir. Yes. Sir, don't use Marathi because most of non-Maharashtrian people are there. So Hindi and English, sir, is okay. Hindi and English. Okay, sure. So नीचे आप देखेंगे तो पहले क्या करना है, we have to provide the students, जो छात्र हैं उनको लर्निंग एनवायरमेंट्स देने हैं. उनको लर्निंग एनवायरमेंट का मतलब है कि उनको सीखने में जितना ज्यादा मदद हो सके उतना करें. सिर्फ स्कूल भेजना, क्लासेस भेजना, एग्जामिनेशंस में बिठाना और मार्क्स कम आने पे डांटना, ये लर्निंग एनवायरमेंट नहीं है. लर्निंग एनवायरमेंट is to be involved in what the topic is, what the subject is, what the chapter is, what is the concept. So most important, what we need to focus when we are creating a learning environment is basically to focus on the concepts. एक बार concepts clear हो गया तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. जो मुझे दूसरी में या 5वीं में सिखाया गया है और मैं वो समझ चुका हूं, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं. और बाय द वे, जो 1ली से 10वीं तक सिखाते हैं स्कूल में, वही फाउंडेशनल लर्निंग हमारे आगे के लाइफ में उपयोगी होता है. Whether it is for my degree, whether it is for my post graduation, whether it is for my research, whether it is for my employment, whether it is for my entrepreneurship, whether it is for innovation, or whether it is for creating anything new. जो हमारा फाउंडेशन फर्स्ट से 10th तक स्ट्रांग होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो मेरा अगला लाइफ बहुत आसान हो जाता है.
तो इसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट्स की जरूरत है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नाउ हमें तो स्कूल में या कॉलेज में किसी ने सिखाया ही नहीं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, काम पे लगने के बाद आपको दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ बातचीत कैसे करनी है, उनको कैसे समझना है और हमारी बात उनको कैसे समझाना है और साथ में काम कैसे करेंगे। ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एंड बच्चे जो भी सीखते हैं जल्दी सीखते हैं, हम बड़े लोग बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो अगर ये सब हम पहले से ही उनको सिखाने लग गए तो फायदा उनका ही है और आगे जाके हमारा भी फायदा है। और इसके वजह से जो लर्निंग एनवायरनमेंट हुआ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हो गया, तो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन तो चेंज होना ही है। तो करिकुलम भी चेंज होगा, यानी थोड़ा सिलेबस चेंज होगा। अभी कोविड के वजह से 25%, 30% सिलेबस निकाल दिया, यानी ये 25%, 30% तो पहले से उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो डाला क्यों था? अभी निकाल रहे हो, पहले सोचते तो और कुछ डालते तो बच्चे कुछ और अच्छा सीखते। ठीक है, कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। तो इसके आगे आएगा स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट्स। तो अभी लर्निंग एनवायरनमेंट्स हो गए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया, वो स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड पैशन एंड इंटरेस्ट एंड ऑल दैट कम्स देयर। करिकुलम और इंस्ट्रक्शन भी चेंज हो गया, द वे ऑफ इंस्ट्रक्शन विल चेंज। टीचर विल नो लॉन्गर डू स्पून फीडिंग, teachers will provide the right learning environment for the children to learn in their own way, at their own pace, in their own space, at their own place. अभी जैसे हो रहा है, घर पे ही पढ़ाई हो रही है तो उनका प्लेस घर हो गया है। कई बच्चे स्कूल में ज्यादा सीखते नहीं है क्योंकि वहां पे इतने सारे बच्चे रहते हैं, इतना सारा शोर रहता है और टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देना नहीं होता है। 40, 50, 60, 70 बच्चे रहते हैं क्लास में, इंडिविजुअल अटेंशन तो देना मुमकिन नहीं है। तो बच्चे स्कूल में ज्यादातर सीखते नहीं है। तो कहाँ पे सीखेंगे? घर पे सीखेंगे। घर पे सीखना है तो उनको लर्निंग एनवायरनमेंट की जरूरत है वहां पे। तो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन भी चेंज हो रहा है, तो असेसमेंट और स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ये हो गया फाउंडेशन। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कोर सब्जेक्ट्स एंड 21st सेंचुरी थीम्स, यहाँ पे हम साइंस, मैथ, इंग्लिश नहीं बात कर रहे हैं, हम कोर सब्जेक्ट्स बात कर रहे हैं और थीम्स बात कर रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट इट। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड करियर स्किल्स। अरे 10, 12, 15 साल बच्चा पढ़ेगा तो उसके बाद 20, 25, 30 साल काम करेगा ना। तो अगर उसको काम करना है, उसको जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए करियर स्किल्स, लाइफ स्किल्स की जरूरत है। अगर वो हम उनको दे पाए तो उनकी जिंदगी बन गई। अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं तो प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है और उसको सॉल्व करने के लिए ये पॉलिसी बनाया है। सो लाइफ एंड करियर स्किल्स आ गया। देन लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वी ऑल थिंक दैट हमारा 10th हो गया, अरे अचीवमेंट, 12th हो गया अचीवमेंट, डिग्री हो गया, अरे बस यार कितना पढ़ना है। नहीं, पढ़ना, सीखना, सिखाना ये तो जिंदगी भर चलते रहता है। तो लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स आर ऑन द टॉप, इफ यू सी, which needs to be there in every individual. Only then we will have a successful life for our children. और लास्ट में आता है इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। ना इसकी जरूरत है, नो डाउट्स, बट इसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अपने आप सीख जाते हैं तो उनको उसी में ज्यादा रुचि लगने लगती है, वो उसमें ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और उससे क्या होता है, थोड़ा एडिक्शन जैसा हो जाता है। तो फोकस पूरा वो ब्लू इस पे चला जाता है, इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। क्यों? क्योंकि आसान है, इट्स इजी। आज जो आसान लगता है कल जाके वो बाकी सब जो लाइफ एंड करियर स्किल्स है, लाइफ एंड लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स है, 21st सेंचुरी थीम्स है, उसमें अगर इफ वी आर नॉट फोकसिंग then it becomes a major problem. So we need to bring in that holistic approach of foundation and the application of it.
So let me go forward. 21st century skills 3 ही है, बस ज्यादा कुछ हमें उस पे फोकस नहीं करना है. फाउंडेशनल लिटरेसीज, कॉम्पिटेंसीज एंड कैरेक्टर क्वालिटीज. एक एक करके लेते हैं. फाउंडेशनल लिटरेसीज में literacy is basically the language, the alphabets, recognition of the alphabet, knowing of the alphabet, playing with alphabets and spellings, vocabulary, so that I can talk well. Whether it is your mother tongue, whether it is any language, Indian language or an international language, literacy is very, very important. And then it is about numeracy. Numeracy is playing with numbers. Numbers are very important. If there are no numbers, there is no life. अभी हाल ही में शकुंतला देवी का मूवी रिलीज हुआ है, अपने बच्चों के साथ देखिए. The importance of mathematics and numbers. It is very, very essential. Whether I am good at mathematics or not, I need numbers in my day-to-day life. So I need to at least know addition, subtraction, multiplication तो चाहिए ही चाहिए. थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो सब कुछ आसान है. और मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि 1 + 1 is always 2. Whereas if I look at English language, there are a lot of ways in which a single word can mean different things in a sentence. So for example, I was explaining the concept of plant to my child, to one of the child. So plant for a second grade child is a plant, is a small plant. Whereas for an engineering student, plant would be some manufacturing plant. Now, there was a sentence which was very confusing in English. Teach your children how to plant plants. क्या मतलब हुआ इसका? How to plant a plant. Now, what is this plant? I know what a plant is, but how will I plant a plant? Which is basically planting a seed. So one word in English has different meanings. I just took one example. ऐसे बहुत सारे examples हैं. So literacy में, अपने language में ambiguity बहुत है. Numeracy में no ambiguity. So that is why I say mathematics is the easiest of the subject, because there is no ambiguity. We will take to that later. Scientific literacy. I need to know about science. I need to be curious. Why is the color of orange orange? Why is the word orange being used for the color as well as the fruit? Now that scientific literacy comes only when I have a curious mind. बच्चे अपने घर पे बहुत सवाल पूछते हैं जब वो छोटे थे. ऑफ कोर्स जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके सवाल पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं या निकल जाते हैं, पता नहीं. बट जब तक बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं. ये साइंटिफिक लिटरेसी इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. They are asking questions because they want answers to it, and that's how they're learning. Now, the fourth point, ICT literacy. ICT is information communication technology literacy. वो एक सब्जेक्ट रखना ही नहीं है स्कूल में. ऐसे ही बच्चे पढ़ लेते हैं, ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं, हमें सिखाने लगते हैं, तो वो ठीक है. फाइनेंशियल लिटरेसी. नाउ लुक एट दिस. हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं फाइनेंस कैसे हैंडल करना है. बस हो गया, पढ़ाई हो गया, डिग्री हो गई, काम पे लग गए, पैसा भी आने लग गया, बट वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, पैसे का क्या करना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे को कैसे सेव करना है, पैसे उड़ाने की बात तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे उड़ जाते हैं. बट फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर फाइनेंस. जैसे अभी का वक्त आ गया, अभी अगर मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी पता होती तो मैं ये सिचुएशन में नहीं होता. ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं. अब दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी. एंड cultural and civic literacy is one thing that we need to know. So if you look at the national education policy, it covers all of this in detail. Cultural literacy is all about knowing ourselves, the rich heritage that we have. No other country in the world has got so much of heritage, culture and history as much as India has. We need to be proud of it. This is the time to take it up. Now, that was about foundational literacy. Now let's look at competencies. How students approach complex challenges. अभी आगे जाके जिंदगी तो बहुत मुश्किल ही होने वाली है, आसान तो कुछ नहीं है.
हमारे लिए थोड़ी आसान था, हमारे लिए भी चैलेंजेस थे, हमने वो चैलेंजेस फेस किए, हमने वो चैलेंजेस को ओवरकम किए और हम सक्सेसफुल बने। अभी जो स्टूडेंट्स को चाहिए इज 4 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, क्योंकि दैट विल हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट आई गेट इन साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री। नो, it is about facing some real life situation like COVID-19. How will I face it? Many of them are having bouts of depression. Many of them are committing suicide because they don't know how to handle things in their life. They are having issues because they don't have these competencies of critical thinking and problem solving. Problem तो सब लोगों को है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, वेरी वेरी रॉन्ग। बच्चों के प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे, वो हमें भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट हमें उनको प्रिपेयर करना है कि जो भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, नॉट जस्ट मार्क्स, इट्स अबाउट देयर होल लाइफ। वी हैव टू prepare them for the rest of their life. So we need to get them to think, bring in that creativity. Now creativity is not just about drawing colorful things. No, creativity in solving problems and also good communication. Many children fail in communicating because they hesitate to talk. They think they are not good at communicating, whereas they are good. They are good at writing. Not many of them are not good at talking, but they're good at writing. Many of them are good at talking, but not in writing. That means all of us have different ways in which we communicate. Usko बढ़ावा देना है. And collaboration. The world is all about collaborating. I cannot do all by myself. मैं अकेला ज्यादा नहीं कर सकता। अगर हम एक टीम जैसे काम करेंगे, जैसे आज हम काम कर रहे हैं, ये तो टीम वर्क है। मैं यहाँ बैठा हूँ, महेश सर कहीं और बैठे हैं, आप सब लोग अपने घर पे बैठे हैं, हरीश सर कहीं उनके घर में बैठे हैं, बट कोऑर्डिनेशन हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, और ये हम आज 90 people we are addressing, we are presenting, we are all learning. This is collaboration. We need to teach children different ways of collaborating. And now come to character qualities, right side. Curiosity, we are all born with curiosity. Initiative, we need to take that initiative. On a Sunday morning, 10 o'clock, all of you have joined in. That means you have some initiative that you have taken. Persistence and grit, छोड़ना नहीं है। बीच मझधार में कोई भी चीज हम लिए हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं है। वो परसिस्टेंस और ग्रिट तो चाहिए ही चाहिए। किसी को सक्सेस ऑल ऑफ सडन 1-2 दिन में नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है। आजकल का प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब से टीवी कलर टीवी हो गया ब्लैक एंड व्हाइट से, और जब से टीवी को रिमोट आ गया, तब से ये परसिस्टेंस और ग्रिट सब भूल गए। क्यों? ये पसंद नहीं है, चेंज करो, दूसरे में निकल जाओ। वो भी अच्छा नहीं है, निकल जाओ, यहाँ एडवर्टाइजमेंट है, नहीं देखना है, दूसरी जाओ। इससे क्या हो रहा है, हमारा हैबिट चेंज हो रहा है। एक जगह पे टिक के बैठने का, रहने का, सोचने का, देखने का तरीका हम भूल रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, ना कि स्कूल में कोई पढ़ाने वाला है, ना कि क्लासेस रहेंगे इसके, ये तो घर में बैठ के ही करवाना है। एडेप्टेबिलिटी, जैसे हम अडेप्ट हो गए, ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन किसी को पता भी नहीं था, बट हम अडॉप्ट हो गए। कैसे? दैट इज बिकॉज वी डिडंट हैव अ चॉइस। बट अगर हमारे पास चॉइस होता तो हम बाहर निकलते, हम जाते, और पता नहीं क्या होता। सो looking into all of this, then building up the leadership qualities, and then social and cultural awareness. I told you 21st century is all about globalization. Social and cultural awareness is not just about our culture and our awareness. It is about getting to know different countries, their cultures, their communication style. What do they mean when they talk some different things? So for example, the culture of India and the culture of US, culture of India and that of Korea, culture of India and that of Australia, ये सब समझने की बात है, और अभी समझाना है बच्चों को
क्योंकि आगे जाके उनको उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है. So learning is lifelong. When we talk about 21st century skills, यहाँ पे कहीं आपने देखा है मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है या सोशल स्टडीज है, कुछ है? नहीं है. ये सब स्किल्स डेवलप होता है when we start focusing on what is needed for the future. We will go to the basics. Let me start talking about it. So 21st century learner के लिए तीन ही चीजों की जरूरत है. एक skills, एक knowledge और अपना character building. So knowledge is what we know and understand. It is all about understanding. So जो कल था वो आज उसकी जरूरत है नहीं है पता नहीं, बट आज की जरूरत है और उसकी जरूरत कल भी पड़ेगी. तो वो जो नॉलेज है अपने पास, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे टुवर्ड्स इंटरडिसिप्लिन. इंटरडिसिप्लिन इज साइंस में वो बहुत कुछ मैथमेटिक्स है, रादर मैथमेटिक्स में बहुत कुछ इंग्लिश है. अब बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड तक, थर्ड स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स में एकदम 100 आउट ऑफ 100, फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गया मैथमेटिक्स में फेल होने लग गया. अरे बाबा ऐसे क्यों? He loves numbers, but we never focused on his literacy. उसको इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, ABCD आता है, पोएम्स आते हैं, उसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि उसको 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड वो पढ़ता नहीं है. और सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस है वो पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता है. ऐसा होता है. फोर्थ में क्या हो गया? फोर्थ में ऐसा हो गया कि नंबर प्रॉब्लम्स आ गए. उसको वो नंबर प्रॉब्लम 2-3 सेंटेंस पढ़ के उसमें से नंबर निकाल के उसमें ऑपरेशन क्या करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या डिवीजन करना है, समझ में नहीं आता है. इसीलिए मार्क्स कम हो गए. मैथमेटिक्स में फेल हो गया. इसका मतलब ये कि मैथमेटिक्स में वो वीक हो गया? नहीं, मैथमेटिक्स उसका स्ट्रांग है ही. उसका प्रॉब्लम है इंग्लिश. तो इंग्लिश सुधारने की जरूरत है. तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाने की जरूरत है. There is a lot of science in language, because the grammar that we teach is all about science. It is a scientific way in which a structure of the language is. And then mathematics में बहुत science है, science में बहुत mathematics है. अभी हाई स्कूल में चला गया बच्चा, फिजिक्स में mathematical problems आ जाते हैं. Find the angle of incidence, find the angle of reflection. अरे ये साइंस है या ज्योमेट्री है पता नहीं चलता है, बट है. साइंस और मैथमेटिक्स साथ में है. तो इंटरडिसिप्लिनरी तो पहले से है. प्रॉब्लम क्या हुआ था इतने सालों में? हमने साइंस अलग दे दिया, मैथमेटिक्स अलग कर दिया, इंग्लिश अलग कर दिया, सब अलग अलग कर दिया. तो उससे क्या हुआ? बच्चों को सब कुछ सीखने का और सब कुछ मिलाने का मौका नहीं मिला. अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये एक अच्छी चीज होने वाली है कि सीखना है बस. It is not that I am learning science, it is not that I am learning mathematics, it is not that I am learning only social studies. No, I am learning everything, because everything is interrelated. There is a lot of mathematics in geography, latitude, longitude, the angles, the difference, the time zones. अरे मैथमेटिक्स आ गया ना, प्लस माइनस आ गया, डिग्री आ गए, सब कुछ आ गया. तो अभी ज्योग्राफी नहीं सीखूंगा अगर मुझे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है. तो सीखना तो पड़ता है. अगर मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो मैथमेटिक्स तो गया, साइंस भी गया, ज्योग्राफी भी गया, स्टैटिस्टिक्स भी गया, अपना कॉमर्स भी गया. तो आर्ट्स लेते हैं. अरे आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स है. किसने बोला आर्ट्स में मैथमेटिक्स नहीं है? मैथमेटिक्स तो सब जगह है. अगर मैथमेटिक्स है तो साइंस है, अगर साइंस है तो सब कुछ है. So it's a holistic approach. Now the knowledge that we bring in is about traditional knowledge, modern knowledge, and the new themes, which is global literacy. And then the skills, how we use what we know. मेरे पास बहुत कुछ skills हैं, मुझे पता ही नहीं है. बहुत बच्चे बहुत creative होते हैं, वो connect the dots बहुत अच्छी तरह से करते हैं. कुछ टीवी पे देखते हैं और कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, वो आके ऐसे कनेक्ट करते हैं. वंडरफुल, वेरी गुड. तो स्किल्स इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट एंड बी क्रिएटिव. बहुत बच्चे खेलते खेलते बहुत सीखते हैं. That means when they are playing, they are also thinking. So Acumen today is actually working on all of this, where we talk about learn to think and think to learn.
The more I think, the more I learn. The more I learn, the more I think. So it goes hand in hand. And I need to inculcate this habit early in life. And that is what the national education policy is all about. So it says that we are in a severe learning crisis. It's a learning crisis, mind you. They're not saying teaching crisis. They're talking about learning crisis. A large proportion of students in elementary school have not attained foundational literacy and numeracy. Because this was the finding, they have given 5 years for foundational literacy and numeracy, starting from age 3, 4, 5, 6, 7, till the age of 8, they would be focusing on learning the foundational literacy and numeracy only. Okay, they are also saying that if action is not taken soon, over the next few years, the country could lose 10 crore or more students from the learning system to illiteracy. ये ऐसे बोल रहे हैं कि अभी एक्शन नहीं लिया तो अगले कुछ सालों में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे इलिटरेसी में चले जाएंगे. 10 crores of children, which means to say that it's close to 10% of the population. Correct? So if we are talking about 10% of the population in the next few years, if it is going to be affected, action has to be taken now. Let's do some correlation. थोड़ा critical thinking का example देता हूं मैं अभी हम पैंडेमिक सिचुएशन में हैं. कोरोना वायरस कोविड-19 जनवरी से चल रहा है. हम लोग देख रहे हैं, पहले चाइना में शुरू हुआ, उसके बाद इटली गया, उसके बाद ईरान, उसके बाद यूएस, देन ब्राजील. सब लोगों के लोग वहां पे मर रहे हैं और दिन ब दिन नंबर बढ़ते जा रहे हैं. बट ठीक है, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं. बट इंडिया में बढ़ के आज के हिसाब से कितने पेशेंट्स हैं और कितने डेथ्स हैं एज पर गवर्नमेंट नंबर्स? 40,000 डेथ्स, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख पीपल अफेक्टेड. थोड़ा डबल कर दो, इंडिया में डेटा इधर उधर का प्रॉब्लम होगा. 20 लाख का 40 लाख कर दो, 40 लाख नहीं 50 लाख कर दो, राउंड ऑफ. 50 लाख पीपल अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस का इतना बड़ा शोर शराबा हाय हल्ला कर दिया इंडिया में. वर्ल्ड में तो हो ही रहा है, इंडिया में सोचो, इंडिया का पॉपुलेशन इज 1.35 बिलियन, यानी 135 करोड़. उसमें 50 लाख लोग अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से. परसेंटेज कितना हुआ? It is not 10%. What we are talking here in education, we are talking about 10%, more close to 10% of our population is being affected if the system doesn't change. This is more than a pandemic. This is more than coronavirus. So we have to take action now. And that is why National Education Policy 2020 is here. In the next 15 to 20 years, India will be the seat of education, seat of learning, and the most innovations, discoveries, research and development would happen from India. We are all going to be part of it. We should feel proud of it. And what is it saying? Attaining foundational literacy and numeracy for all children must become an immediate national mission and an indispensable, non-negotiable part of the curriculum. National mission बोल रहे हैं ये. National mission, एक example देता हूं मैं. पोलियो ड्रॉप्स जो 20-25 साल पहले शुरू हुआ, पोलियो ड्रॉप्स देना शुरू किया, दैट वाज अ नेशनल मिशन. उसके वजह से पोलियो इरेडिकेट हो गया इंडिया से. 20 साल लगे. अगर हम एजुकेशन पॉलिसी आज से कुछ शुरू करेंगे तो 15-20 साल लगेंगे उसके फल देखने में. बट उसका उतना इंतजार नहीं कर सकते बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग फास्ट. So we have to do whatever we have to do now. This is the time. If we don't do it now, we are gone. Our next generation will curse all of us. आगे वाली पीढ़ी हमें शाप देंगे बाद में कि जो ये सब करना था आपने क्यों नहीं किया, हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी. ऐसे हमें करना नहीं है, करने देना भी नहीं है और ऐसे सुनना भी नहीं है. तो इसके लिए करना क्या है? बहुत सिंपल चीजें करनी है. I will not get into these details, but some of the chapters I will just go through the objectives of each. Now early childhood, देखिए कैसे शुरू होता है. जो प्रॉब्लम है वो जड़ से शुरू करना है. सॉल्विंग जड़ से शुरू होगा तभी आगे जाके बहुत बड़ा अच्छा सुदृढ़ बच्चा बनेगा.
every child in the age range of 3 to 6 has access to free, safe, high quality, developmental appropriate care for education by 2025. ये लास्ट ईयर था, तो 2025 का 2026 हो जाएगा, एक साल इधर उधर. But they are saying high quality, safe, developmentally appropriate care and education. ये developmentally appropriate care is because everyone's mental development थोड़ा ऊपर नीचे होता है. हम सब लोग एक जैसे नहीं है, इंसान है भाई, मशीन नहीं है, तो एक जैसे नहीं हो सकते और एक जैसे होना भी नहीं है और बनना भी नहीं है. एक जैसे बनेंगे तो चाइना जैसा हो जाएगा, रोबोट्स बन जाएंगे आप सब लोग, वैसे नहीं बनना है. तो developmentally appropriate care and education is that there would be slow learners, there would be fast learners, there would be very fast learners, there would be very curious learners, there would be very silent learners, there would be very active learners. So learners, अपने बच्चों को देखेंगे आप तो सब अलग अलग हैं, बट सब सीख रहे हैं, उनके उनके तरीके से सीख रहे हैं, उनके हिसाब से सीख रहे हैं, उनके तरीके से सीख रहे हैं. ये डॉक्यूमेंटेड है. तो इसमें करना क्या है, इनको सिर्फ पहले जो तो 21st सेंचुरी स्किल था, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. सो लर्निंग एनवायरनमेंट इन द फर्स्ट 5 years is to provide them with everything that they can learn. They are very good learners, they are fast learners in that age group of 3 to 8. कुछ भी पढ़ाओ उनको, कुछ भी सिखाओ, बहुत जल्दी सीख जाते हैं. बट उनके तरीके से सिखाना पड़ता है, अपने तरीके से सिखाना नहीं है उनको, उनके सीखने के तरीके से हमें अलाइन होके उनको सिखाना है. क्योंकि 85% of cumulative brain development occurs prior to the age of 6. ठीक है, 6 का 7 कर देते हैं, इसीलिए वो 8 years तक वो first 5 years development है. So अगर 85% of my cumulative brain is happening by the age of 6, 7, 8, that means most of the learning will also happen during that age, or most of the quick learning will happen at that age. Wonderful. तो उधर फोकस करना है. अगर फोकस नहीं है, नो प्रॉब्लम, अभी भी फोकस कर सकते हैं. जिनके बच्चे 8 साल से ऊपर हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है. वो जितना उनको सीखना है वो सीख चुके हैं, जितना उनको सीखना है वो सीख भी रहे हैं और सीखेंगे भी. सो ये ध्यान में रखना है कि उनको हमें लर्निंग एनवायरनमेंट देना है. Look at this, what they are talking about. This is in general. It says supervised play-based education. खेल के भी बहुत सीखते हैं. खेलना यानी मोबाइल पे खेलना नहीं, गेम्स खेलना है, फिजिकल गेम्स, not the digital or the virtual games. Play-based education in groups and individually. ग्रुप में भी खेलना है, कोलैबोरेशन सीखते हैं, टीम वर्क. जो अपने इंडियन गेम्स इतने अच्छे हैं, खो खो कौन खेलता है आजकल? टीम वर्क कितना लगता है उसमें? कोई नहीं खेलता. इंडिविजुअली, इंडिविजुअल गेम्स, कौन से इंडिविजुअल गेम्स हैं? अपने शटल है, चेस है, मल्लखंब है, कितने सारे अपने इंडियन गेम्स है जो इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं. अपना कबड्डी है जो ग्रुप में खेलते हैं, खो खो है जो ग्रुप में खेलते हैं. उस पे सब फोकस ही नहीं है. पहले जो हम खेल के आए हैं, इसीलिए हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है. आजकल के बच्चे खेलते नहीं है, इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो अभी ये सब करना है. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग चाइल्ड इनेट एबिलिटीज एंड ऑल इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग स्किल्स. ये सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, ये सिर्फ 5th स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है. 10th का हो गया तो सब कुछ भूलना है, नो. 12th हो गया, अरे हो गया, मेरा लाइफ बन गया, नहीं. जिंदगी में सीखना कभी थमता ही नहीं है. और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमें ये सब करवाना है बच्चों से. वेयरइन वी टीच देम कोऑपरेशन, टीम वर्क, सोशल इंटरेक्शन, कंपैशन, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, कम्युनिकेशन, कल्चरल एप्रिसिएशन, प्लेफुलनेस, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी. हाँ, पढ़ के थक गया मैं, बट ये सब करवाना है. क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑलरेडी देयर इन ऑल ऑफ अस. उसको थोड़ा चैनलाइज करना है. सो बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8 उनको डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन देना है. जाओ, जो सीखना है तुम सीखो और बाद में आके मुझे बताओ. तो इससे क्या होता है, उनका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ जाता है. उनको कुछ सीखने में उनको खुद का मजा आता है, क्योंकि उनके तरीके से सीख रहे हैं. और बाद में आके आपको बताना है तो कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी,
इमेजिनेशन, वो सब भी बढ़ जाता है. सो इट इज मेनली अबाउट इंटरेक्टिंग, कोलैबोरेटिंग एंड गेटिंग देम टू वर्क टुगेदर. तो ये सब करना है तो पेडागोगिकल चेंज करना है. तो ये करिकुलम, असेसमेंट, सब कुछ चेंज होने वाला है, तो चेंज हो रहा है. So foundational literacy and numeracy is all about providing them with the right learning environments. तो अभी ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखना है कि the child is engaged more into formal school education. तो इसीलिए 3 years से शुरू होके आगे निकलना है. So what are we focusing in this foundational years? So foundational years is still 8 years. 8 years would be till the grade of 3, yeah, 2. Till the age of 8 would be to the grade of 2 complete, which means to say that what we need to build in this foundational years of 5 years is reading, writing, and speaking of languages, not just one language, languages. And this is the time when their mind is very fertile. कुछ भी डालो अंदर, बहुत जल्दी सोख लेते हैं. तो ज्यादातर ज्यादा अगर आप लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगाएंगे इस उम्र में, तो आगे जाके इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होगा. सो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड ऑन मैथमेटिकल आइडियाज. उनको फॉर्मूलाज नहीं देना है, उनको एल्जेब्रा नहीं सिखाना है, उनको ट्रिग्नोमेट्री से कंफ्यूज नहीं करना है, उनको सिर्फ मैथमेटिकल आइडियाज देना है. और थिंकिंग, वी हैव टू एनहांस देयर थिंकिंग. व्हाई वी नीड टू डू दिस इज बिकॉज इस उम्र में रोट लर्निंग बहुत इजी हो जाता है. रोट लर्निंग का क्या मतलब है? बाय हार्ट. बहुत सारे बच्चे बाय हार्टिंग में माहिर होते हैं. उनको एक पोएम दे दो, 2 बार सुन लिया, बस रट लिया फटाफट, वेरी गुड. मैथमेटिक्स में रट नहीं सकता हूं. अच्छा, टेबल्स है, टेबल्स रट लिया, ठीक है. टेबल्स आते हैं जो 10 तक है. 5 1 जा, 5 2 जा, 5 10 जा, 13 1 जा, 13 10 जा. 11 का पूछो तो हड़बड़ा जाते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं 10 तक कर सकता हूं तो 11 12 13 भी कर ही सकता हूं. रट मार लिया तो मैं नहीं कर सकता. अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है, अगर वो समझ में आ गया, तो मैं 10 11 जा भी कर सकता हूं, 10 12 जा भी कर सकता हूं, 17 11 जा भी कर सकता हूं, 17 18 का भी कर सकता हूं. दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक देम थिंक. सो रोट लर्निंग से बाहर आना है. रोट लर्निंग इज वेरी गुड इनिशियली. आगे जाते अगर रोट लर्निंग का हैबिट लग गया, तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा, बहुत परेशानी होगी बच्चों को, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स और साइंस ज्यादा रट नहीं पाते हैं, उसको समझना पड़ता है. So, if students are giving a solid foundation in reading, writing, speaking, counting, arithmetic, mathematical, and logical thinking and problem solving, and in being creative, अगर ये हम पहले 5 साल में कर पाए तो हम जीत गए. उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनको खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा, खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे सीखते हैं, उनको कैसे सीखना है. वो खुद ब खुद सीखने लगते हैं. टीचर्स और पेरेंट्स सिर्फ उनको चैनलाइज करेंगे. वी विल पॉइंट देम इन द राइट डायरेक्शन. एक बार उनको वो समझ में आ गया, देन इट बिकम्स इजी, फास्ट, एंजॉयबल एंड मोर इंडिविजुअलाइज्ड. मेरे हिसाब से मैं ही सीखूंगा ना. अब गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी कि तुम ऐसे सीखो, नहीं, वो बोलेगी ये सीखना है. कैसे सीखना है वो हमें तय करना है. राइट? सो ऑल दिस कीपिंग इन माइंड, it talks about having regular language melas and mathematics melas, where children can participate and demonstrate their abilities both of the subjects. Languages and mathematics दोनों है. Language और mathematics आ गया तो science भी आ गया उसमें. और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? Every child in grade 1 to 5, अभी थोड़ा expand हो रहा है, 1 to 5 will have a workbook for languages and mathematics in addition to school textbook. टेक्स्ट बुक में क्या है? कंसेप्ट रहते हैं, चैप्टर रहता है, टॉपिक रहता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहते हैं. क्वेश्चन आंसर आजकल के टेक्स्ट बुक में तो ऐसा डिजाइन हो गया है कि क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज के आंसर्स लास्ट पेज में है. बच्चे को एक बार समझ में आ गया, वो पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखता है, पीछे जाता है, आंसर देख के लिख देता है और दिखा देता है, बस हो गया. आपको भी लगता है अरे वाह वेरी गुड,
कुछ पूछोगे तो पता नहीं चलता है। कई कई बच्चे स्मार्ट रहते हैं, जो रोट लर्निंग करते हैं वो बाय हार्ट कर लेते हैं, तो उनको वो ऐसे एहसास दिलाते हैं कि उनको सब आता है। बट अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर लूं, सेम क्वेश्चन, आंसर इज द सेम, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर लिया, उनको आंसर पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोच के नहीं किया है उन्होंने। ये सब हमें बंद करना है अभी, क्योंकि आगे जाके उनको ना क्वेश्चन मिलेंगे ना आंसर मिलेंगे। कहां पे प्रॉब्लम्स जो आएंगे लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वही पता नहीं है, उसके आंसर्स कहां से पता होंगे? So we have to make them ready so that they think now. So keeping this in mind, all this is fine. Okay, my last slide when it comes to national education policy, it talks about curriculum and pedagogy. Curriculum is basically second में क्या होना चाहिए, fifth में क्या होना चाहिए, 10th में क्या होना चाहिए, subject wise, topic wise, that is curriculum. And pedagogy is the way the teaching has to be done, the way the education system needs to develop is pedagogy, are transformed by 2022, ये पहले था, एक साल इधर उधर हो रहा है, in order to minimize rote learning, by hearting करना ही नहीं है उनको, and instead encourage holistic development of individual and 21st century skills such as, which I've already covered, critical thinking, creativity, scientific temper, communication, collaboration, multilingualism, this is multiple languages, problem solving, ethics, social responsibility and digital literacy. Digital literacy last है, but अभी क्या हो रहा है, because of everything going digital, digital literacy first आ गया है। digital literacy देने की जरूरत भी नहीं है, बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं। So this is the crux of national education policy. तो अभी तक मैंने साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, ईवीएस ऐसे कुछ बात नहीं किया, बट ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे, ये सब्जेक्ट्स कहीं नहीं जा रहे वाले, तरीका बदलने वाला है, सिखाने का तरीका और सीखने का तरीका। जो अभी तक हम बात कर चुके हैं वो वही हाईलाइट करता है कि we need to develop those skills, and first and foremost thing that needs to be developed is the love for learning. सीखने का तरीका जान लिए, अगर बच्चे अगर जान लिए तो लाइफ लॉन्ग सीखते रहेंगे, क्योंकि आज जो सीखा है वो कल उसका यूज होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट कल डेफिनेटली कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। इतना कुछ बदलाव हो रहा है वर्ल्ड में, फॉरगेट अबाउट कोविड-19, बट इवन अदरवाइज टेक्नोलॉजी इतना बदल रहा है, कल्चर इतना बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन इतना बदल रहा है, फाइनेंस इतना बदल रहा है, सब इंडस्ट्रीज बदल रहे हैं। तो वो बदलाव में हम कितने अडॉप्ट हो सकते हैं वो सिखाना है बच्चों को, और जो सीखा है फर्स्ट टू 10th या फर्स्ट टू 12th या फुल टिल डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे उसको इस्तेमाल करें वो देखना है। अगर हम वो कर पाए तो हमारे बच्चे इनवेरिएबली सक्सेसफुल रहेंगे और नाम रोशन करेंगे, खुद का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने देश का। बस with this there is a lot of other things. With this I think we are very much in time, sir. Mahesh sir, Yes, sir. Yes, we sir. are very much in time, so you tell me how we go about. We will take the questions of the parents, teachers. So according to that one, you can explore more. Yeah, Yes, definitely, sir. Yeah. Okay. तो presentation और भी है या खत्म हो चुका है? Sir, presentation और भी है, but if there are relevant questions, I will go to the respective slides. Otherwise, presentation है अभी, which I will stop sharing for the time being. What I will do is we will open it up for questions, and later on we will talk about what Acumen today is doing and how we are in alignment with the national education policy. Yeah. So one question is there of Sarika ji. Yes. कि this national education policy कभी से implement होगी for the lower
you said that 2025 से होगी, but for the higher standard from 5th 6th 7th 8th 9th 10th उसके लिए कभी से इम्प्लीमेंट होगी? सर इम्प्लीमेंटेशन अभी से शुरू होने वाला है। ओके, जब से स्कूल्स शुरू होंगे तब से धीरे धीरे शुरू होने वाला है। बिकॉज ऑफ COVID-19 it has not got implemented this year, but definitely from next year it is going to be implemented. जो मैंने 2025 बोला है, it is not the year for implementing, it is the year when we achieve the objectives as what is being defined. So instead of 2025, probably it's going to be 2026, but we have to achieve that by that year. So we have 5 years in our hand to achieve the basic objectives of basic foundational education. okay, After that, it is going to remain and it is going to improve. So for all grades, it is not going to start like the school. आज मेरा स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, नेचुरल प्रोग्रेशन से एवरी ईयर 1 ग्रेड अप होते जाएगा, वैसा नहीं है। हर ग्रेड के लिए, हर स्टैंडर्ड के लिए, not just in school but also in colleges and universities, this is getting implemented from now. In small ways now, because we are dealing with some other situations, but from next academic year this is going to be implemented 100%, and we don't have enough time. We have already lost enough time. We have already lost probably 2-3 generations because of the problems we had in the education system. We don't want to lose more. We don't want to lose out on one more generation. So we will be doing this as early as next month. But the formal implementation will happen from next academic year. Okay. Thank you, sir. One more question from Satish ji. Okay. Now students in standard 8, from next year this pattern will apply, or it takes some time for 9th standard? Okay. So it's not that all of a sudden it will be 5 plus 3 plus 3 plus 4. Yeah. जो ये है, so 5 years हुआ, it is coming to, okay, I'll just bring up, I'll share my screen again so that it will make sense. Let me share my screen. I'll just share the few initial. Okay. So if you see, this is what the new structure is all about. So you would be worried कि क्या होगा क्लास 3 में, क्लास 6, क्लास 8 और क्लास 9 और 12 में क्या होगा। तो जो आज के डेट में, आज के एकेडमिक हिसाब से जो क्लास 3 और 5, 6 और 8, 9 और 12 में रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज सिलेबस इज नॉट गोइंग टू चेंज. The curriculum changes will start coming in from next academic year. But what skills are needed? For example, the skills of thinking. ये तो curriculum में आने की जरूरत नहीं है, syllabus में आने की जरूरत नहीं है. ये हमें ही करना शुरू करना है अभी. Sorry, अभी से शुरू करो. Make them to start thinking in their own way. Get them to think mathematics and science, mathematics and language. I'll give a small example. English is the most easy language on this planet Earth. But हमें वो डर है. ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि we are all Indians. But the problem is we are not proud Indians. ठीक है, थोड़ा proud बनाते हैं अभी. If we can learn any of the Indian languages, Indian language तो हमारे लिए बहुत आसान है. हिंदी हो, मराठी हो, साउथ इंडियन लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, बहुत इजी है. अगर हमारे इंडियन लैंग्वेजेस हमारे लिए इतने इजी हैं, तो इंग्लिश तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है. हमारे लैंग्वेज में संधि है, दीर्घ स्वर है, अपस्वर है, काना है, मात्रा है, a lot of things. Our language is very complicated, but we are easy with it. इंग्लिश में ये सब कुछ है ही नहीं. अभी बोलो ABCD A to Z, कितने अल्फाबेट्स हैं? 26. हमारे हिंदी में अरे 50 से ज्यादा है सिर्फ अल्फाबेट्स. उसके बाद एक एक का आ उ ई आ करते बैठेंगे तो 1000 तक जाएगा चाहिए तो इंडियन लैंग्वेजेस में. अगर वो हमें आसान लगता है तो सिर्फ 26 लैंग्वेज का इतना डिफिकल्टी क्यों लगता है? सब हमारी सोच है. तो यही बदलना है.
English is the easiest of the language, especially for Indians. Yes, sir. The problem is, I start talking English the way I talk Hindi or Marathi. वो सिर्फ सीखना है कि क्या है. What is the difference? Once I get to know the difference, it's all about the words. And I know all English words. I don't have to use flowery languages. I don't have to use complicated words. No, simple language जो आगे के आदमी को समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए, बस काफी है. तो ये हमें करना है अभी से. अभी मैथमेटिक्स का एग्जांपल लूं. सिंपल मैथमेटिक्स. अभी for example, if my numbers are not strong, I will not be able to understand the concept of 4 operations. 4 operations are very important. Addition, subtraction, multiplication, division. अभी अगर मुझे 4 operations समझ में नहीं आए तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ज्योमेट्री नहीं समझ पाऊंगा. अलजेब्रा तो दूर की बात है, ट्रिग्नोमेट्री तो भूल ही जाओ. चाहिए, क्यों चाहिए? Whether I am an engineer or not, अलजेब्रा तो हम दिनचर्या में यूज करते हैं. For example, अभी 1 kg rice is costing me 60 rupees. How much will it cost for 6 kilos? Multiplication है. अभी बाहर जाके देखते हो कि if I buy 2 books, it is at 25% discount, and the discounted and the original rate is 1200. So 1200 में 25 निकालना है, तो उधर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, माइनस भी आ गया, सब कुछ आ गया. सिंपल दिनचर्या में हम सब कुछ यूज करते हैं. प्रॉब्लम इज फिक्स हो गया माइंड में कि अरे नहीं 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 मुझे नहीं आता है. अरे क्यों नहीं आता है? आता है, बहुत आसान है. इसीलिए पहले 5 साल अगर मेरे अच्छे फाउंडेशन में हमने लगा दिया और अगले 3 साल प्रिपरेटरी में, सो 5+3 अगर मेरा स्ट्रांग हो गया तो कुछ भी पढ़ाओ मुझे, whether it is astronomy, whether it is astrophysics, whether it is nuclear medicine, whether it is any other nuclear science, I will be able to understand because my foundation and my preparatory levels are strong. So बस यही करना है और अभी से करना है. गवर्नमेंट बताए ना बताए हमारे बच्चों के लिए तो हमें ही करना है, तो अभी से शुरू करो. या सर. I answered your question. या सर, कुछ लोग हैं वो खुद से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. दे वांट टू इंटरेक्ट विथ यू. Please. So first, Professor Arif ji. Arif sir, you can unmute yourself and ask. Professor Arif. Okay. Maybe you have problem. Then Vinayak Chaudhary. Vinayak, तुम्ही अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकता. Yes sir. हाँ विनायक. नहीं सुनाई नहीं दे रहा है. अगर वो बात कर रहे हैं तो म्यूट में रहेंगे. क्या उनको अलाउ किया है? दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ. आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विनायक, आरिफ सर. देन योगिता जी आपको भी कुछ पूछना है. योगिता जी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. Okay. Maybe they have problem. So by the time they all unmute and mute, what I would want to present is our acumen today is working on designing the necessary details as what required by the national education policy more than two and a half years back. So much before even the national education policy came as a draft, we started working on implementing some of the basic necessities needed to be changed in the education system. So what we have done is we have identified 6 learning strategies and identified a methodology for our learning, which you see in the middle, which is called SIMECOR, which is mainly talking about simplified learning, meaningful learning, conceptual learning, and reinforced learning. So if you see, the focus is on learning, and the entire national education policy, which is 484-page document of 2019 and 66 pages of 2020, all put together talks about focusing on learning.
We started this almost 3 years back, working on this for incorporating the thinking abilities of the children, the analytical thinking, critical thinking, logical thinking, reasoning, and problem solving skills by aligning it with the curriculum. So when we say that this is a methodology which helps you in aligning with your curriculum, with your syllabus, but provides you ways and means of improving your thinking abilities, it would definitely make you a better person in terms of the concepts, in terms of knowing, in terms of applying, and in terms of analyzing. प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है जो है वो सिर्फ इंपॉर्टेंस देता है मार्क्स पे। उसका मतलब है मार्क्स यानी मार्क्स में रैट रेस। उसका मतलब है कि मैं ज्यादा मेमोराइजेशन और रिमेम्बरिंग पे ध्यान दूं, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में ज्यादातर होता नहीं है। और जैसे जैसे हायर ग्रेड में जाते हैं तब अनलेस until I don't understand, I will not be able to apply, I will not be able to analyze, I will not be able to create anything new. So what is important is to have this holistic approach, and that is what we are doing. And for all the participants today, as a special offer that you all have attended, you've been in touch with my sir and Harish Simpi sir. Harish Simpi is our partner in Thane, Mumbai area. What we are offering is grade 1 to grade 10. We have devised these books. हमारा ऐप भी है, वो भी हम आपको बता देंगे। ये जो हमारे बुक्स हैं, we are doing this physical digital approach, offline online approach, because we don't want children to be online all the time. We want them to be in the physical world. The look and feel, the hold and touch, the read and write is what needs to be done in a physical manner. Only then my hand-body coordination, hand, mind, and heart coordination comes up very well. So that's why we have created 10 books for every grade, which means to say that first standard to ninth standard, we have created 10 books, one book each to be completed every time. Every book is 60 pages. So little 60, 64, 66 essay pages hai. So if you look at it, it is a whole 600 pages of learning of the concepts of science, math, English, general knowledge. One book at a time. They finish that book, go to the next book, because every book has everything in it. Separate books nahi hai. Holistic learning ke liye, we have not segregated, these are mathematics books, these are English books, these are science books, these are general knowledge books. No, we have combined everything in every book. So the child will learn everything. It is a holistic learning, and it is not that I don't like mathematics, I will not learn. Just flip through the pages and there is a lot of learning that will happen. So one book to be completed in a month. Many of them complete it in 15 days, 20 days. Many of them complete it in 1 week also. Some of them take 1 month. That's okay. At home or at the teacher's house, if this one book is given to them to be completed at their own pace, no competition. देखो उसने खत्म कर दिया, तुमने नहीं किया, नहीं, उसको सीखना है, सीखने के लिए दे रहे हैं, मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं। बच्चा ठीक तरह से सीख जाएगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और एक बार मार्क्स आ गए और उसको समझ में आ गया, भले ही 90-95% ना ले, उसको समझ है, उसको इतनी अकल है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, बस उतना ही करना है। That is what we are doing. This has got workbook, this has got practice book, this has got concepts, this has got visuals, this has got read write. This is aligned with all the different learning preferences and styles of that individual. So if you go online on our website, we've been getting orders. In fact, our orders have increased during the pandemic. We have started fulfilling it all over India. So the whole set costs about 1,530 rupees, the set of 10 books, and the app comes to you free. So for today, what we are going to do is we are giving it at a discounted rate of 10%. So 1,530 का round off कर दिया, 1,500, उस पे 10% discount, so 150 less. This is including shipping. It will be shipped to your house directly. You can coordinate with Harish Simpi ji. If you want 2 grades, 2 grade का चाहिए तो 20%
डिस्काउंट हो गया, so that comes to 1200 if you buy 2 sets. This is for grade 1 to grade 9. अभी grade 10 का बताता हूं. grade 10 में हमने 12 बुक्स किए, 12 books, not 10, and each book is more than 66 pages. So what we are talking about is close to almost 800 pages of concepts of science and math only. हमने 10th में जनरल नॉलेज भी निकाल दिया, इंग्लिश भी निकाल दिया, क्योंकि 10th is a very important year. It will remain important. It will be so. So that's why we have created 12 books, and the 12 books are at an MRP of 1,800. We are giving 10% discount, flat 10% discount on this, including shipping, for any parents who would want to take this up. One book at a time. Your child will understand the concepts in a very simple, easy, and reinforced manner. जो टीचर्स उनको पढ़ाएंगे ये उनको सिखाएगा, वो भी सिखाते हैं, ये बच्चा खुद अपने तरीके से सीखेगा. नोट्स भी है, टेक्स्ट बुक भी है, टीचिंग भी है. This is like a learning aid which will help the child to learn in their own way, at their own pace, in their own place, at their own space. This is not for marks, this is not for examination, this is for their life. So this is what we have done. For further details, you can contact Harish sir. He will coordinate. And for any questions, I'll throw it open now. Sir. Yes. Can I ask the question now? Definitely, sir. Please. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक्स करूँगा कि आपको बहुत नॉलेज है और आपने बहुत कम वक्त के अंदर बहुत अच्छी सारी बातें बताई. लेकिन मैं जानता हूं सर आपने बहुत सारी चीज़ें वक्त की कमी की वजह से शायद नहीं बता पाए. सर जहां पे कॉइन के 2 साइड होते हैं, डेफिनेटली सर ये एजुकेशन पॉलिसी के भी 2 साइड होंगे. जितना आप इन्वॉल्व हो एजुकेशन में, और मतलब जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ कि आप बुक्स वगैरह भी लिखे हो, इसके लिए डिज़ाइन किए हो, तो डेफिनेटली आपका 100% इसके अंदर है. तो सर इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर क्या इसके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है जो शायद हाईलाइट नहीं वक्फे के अंदर, तो थोड़ा सा कुछ अगर बताना चाहोगे तो सर प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी. ठीक है, ओके. सो एज यू सेड, कॉइन के दो हिस्से रहते हैं, तो रहेंगे डेफिनेटली. कंट्रोवर्सी आजकल किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये कंट्रोवर्सी नहीं है. सो आई विल नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग, बट यस, फ्लिप साइड ये है कि teachers are the main pillars now. If you look into some of the chapter 5, it talks about teacher. It is talking about getting back the respect for the teaching fraternity. जो आज के टाइम पे, I hope all of you agree to this. I know you all will agree. The respect for the teacher is not there at all. ना बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, ना कोई और रिस्पेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार टीचर क्या करता है, यार कुछ नहीं करता है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सब कुछ हम सर्च करते हैं, गूगल बाबा है तो सब कुछ हो गया. That is going to get back. So the flip side is टीचर्स को अभी एक जो रिस्पेक्ट मिलने वाला है, जो हम हमारे टीचर्स को देते थे 20-25 साल पहले, वो फिर से आएगा. नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, और उधर जाते यार क्या आदमी है, ऐसा नहीं. So that is going to come back. So which means to say that it is going to be a holistic development of not just your thinking but also your behavior. So ये होने में टाइम लगेगा सर. The flip side is ये सब implement करने में टाइम लगेगा, और टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये अभी डिफिकल्ट लगता है, और डिफिकल्ट भी है, बट नामुमकिन नहीं है. अगर हम नामुमकिन करके बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है. अब ये प्रॉब्लम सिर्फ 1st to 10th का या 1st to 12th का नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं. Because everybody is used to a certain kind of teaching, certain kind of system, certain process for the last 20-25 years. All of a sudden, if I have to change, it is not going to happen. So it's going to take time. So for getting to the basics of seeing that we have achieved our objectives, हमारे पास 5-6 साल हैं. वो 5-6 साल बहुत मेहनत है,
बहुत मेहनत और मुशक्कत करना है, इसमें बहुत पसीना बहाने वाला है, बहाएंगे, बट इसको अचीव करना है सर। फ्लिप साइड यही है कि जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते वो निकल जाएंगे इसमें से, और जो हार्ड वर्क डालेंगे वो रहेंगे आगे, और जो हमारे जो पहले वाले जैसे टीचर्स थे वैसे हमारे स्टूडेंट हमें याद रखेंगे आगे जाके। राइट सर। क्यों या सर। सर पूछ सकता हूँ सर, क्योंकि आपने Please, हाईलाइट please. किया दूसरे क्वेश्चंस को, इसके लिए हाँ। सर रियली मतलब आपने जो बोला मैं उससे 100% एग्री हूँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं आप देखोगे सर टीचर का सिलेक्शन, टीचर का अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ों में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आ जाएंगे। वहीं जहाँ आपने टीचर्स की बात की तो सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने एग्ज़ाम का जिक्र नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ आपके पास वक्त की कमी है, 11:30 ऑलमोस्ट होने आ गए हैं, लेकिन सर ये एग्ज़ाम के अंदर जो रिजल्ट इवेल्यूएट होने वाले हैं, असाइनमेंट जो सामने आएंगे, उसके अंदर स्टूडेंट्स खुद अपना ग्रेड करेगा, उसके फ्रेंड्स उसके ग्रेड्स करने वाले हैं। तो सर तुम्हें नहीं लगता कि ये ट्रूली चीज़ें सामने आएगी कि मैनिपुलेटेड वे के अंदर आएगी? सर मतलब सही मायनों में आप थोड़ा रोशनी डालिए ना इसके ऊपर प्लीज़। नहीं, गुड। सो दीज आर ऑल ग्रे एरियाज एज ऑफ नाउ। हमें ऐसे क्या होने वाला है वो पता नहीं है जो लिखा हुआ है, बट लेट मी टेल यू, पॉलिसी डॉक्यूमेंट only talks about the highlights and the high level stuff that we need to do. How we have to do, उसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी है, वो शेयर होने लग जाएगा। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कब तक करना है, कौन करेगा, उसमें स्किल सेट क्या लगेंगे, उसमें ट्रेनिंग क्या लगेगा, उसमें क्या नॉलेज ट्रांसफर कैसे होगा, वो सब प्लान्ड है सर। ये अगले कुछ 2-3 हफ्ते में, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, ये सब क्लैरिटी मिल जाएगा। So when we talk about assessments, good that you brought this out. Examinations will no longer be for marks. Examinations will be to see, if you see my screen, to see how the overall brain development has happened according to that age. There are a lot of psychologists who have worked on bringing out the evaluation criteria. So the criteria is not just about how much of marks you have got in mathematics or science. It is how you are able to apply it in real life situations. So the questions are going to be different. It's not that it's going to be difficult. The questions are going to be basic. It is to test the child on not just the understanding, but not just on the applying, but also on analyzing. It is like university में अगर हम compare करेंगे तो many of the universities, for me also, BITS Pilani, I did my MS from BITS Pilani in 2001-2002, we had open book exams. अब ओपन बुक एग्जाम है तो कुछ पढ़ के नहीं जाना है ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेडीमेड आंसर नहीं रहता है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू अप्लाई एंड देन गिव द आंसर। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट लेवल वेयर इन जो भी करना है करो, इंटरनेट एक्सेस रहेगा आपके पास, टेक्स्ट बुक रहेंगे, नोट्स रहेंगे, सब लेके जाओ एग्जामिनेशन रूम में, बट वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स ना आपको ऑनलाइन मिलेगा, ना टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ना आपके ट्यूशन नोट्स में मिलेगा, ना आपके खुद के नोट्स में मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। अगर आप समझ चुके हैं सही तरीके से तो आपके हिसाब से आप उसको आंसर कर पाएंगे। द अप्लाई एंड एनालिसिस इज व्हाट गोइंग टू बी इवेल्युएटेड, नॉट योर रिमेम्बरेंस। रिमेम्बर तो सब लोग करते हैं, एक बार रट्टा मार लिया तो जिंदगी भर याद रहता है वैसे, बट उसका क्या फायदा है अगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊं। So it is more of taking ourselves towards the higher order thinking skills rather than remaining at the lower order thinking skills of remembering, understanding and reproducing. सर थैंक यू, आपने बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। सर पूछ सकता हूँ एक सवाल, क्योंकि आपकी जैसी पर्सनालिटी दोबारा नहीं मिलेगी तो सर मिलेंगे सर, क्यों नहीं सर, ये जो महेश सर है और हरीश सर है, हम ये हम रेगुलर बेसिस पे करने का चर्चा हो चुका है, वो करेंगे। क्यों सर? जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपसे परमिशन लेके ही पूछूंगा। प्लीज़ मैनेजमेंट जो भी है आप अलाउ करोगे तो मैं 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगा। या सर।
हाँ सर, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे स्विचिंग का बहुत हम स्विच कर सकते हैं फ्रॉम कॉमर्स टू साइंस और मे बी एनी एनी वी कैन स्विच एनी सब्जेक्ट्स, है ना, इस तरह। वो टॉपिक को आप शायद कवर नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से। लेकिन सर कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो भी पॉलिसी बनी है अमीर को अमीर बनाने के लिए और गरीब को गरीब बनाने के लिए? सर मेरा निगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, सिर्फ हम जब कोई चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो हम दोनों साइड को लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा सर, आपको नहीं लगता कि ये स्विच करने में चार्जेस पे करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बर्डन्स आएगा और स्विचिंग की वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्विचिंग की वजह से जो है आप देखोगे बच्चे कांस्टेंट नहीं रहेंगे एक चीज़ को पकड़ के, उसके अंदर बात हुई, ये सब चीज़ें सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? और सर सेकेंडली आप देखोगे पूरी पॉलिसी के अंदर सर कहीं भी सर रिजर्वेशन का या ओबीसी ए लोगों के लिए सर कोई प्रोविजन वगैरह कुछ रखा नहीं गया है। मतलब सर आपको नहीं लगता कि सर जो हमारे लाइक लॉज बने थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी समाज को ऊपर लेके आने के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन उन्होंने जो लिया था, अच्छे काम के लिए लिया था, लेकिन कहीं नहीं लगता सर कि वो लॉज भी ब्रेक हो रहे हैं? और सर लास्टली सर ये कहूँगा कि सर ये पॉलिसी है, ये ड्राफ्ट है, अब तक कानून तो बना नहीं है सर। जैसे कि ये लोग बात कर रहे हैं कि सभी सेंट्रलाइज करने की, तो सर यूजीएससी को सर अगर कैंसिल करना है तो डेफिनेटली सर उसके लिए लॉ पास करना पड़ेगा, इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और सर बाकी की जितनी भी अथॉरिटीज़ है, जैसा डीएड बीएड है या टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इन सबको सर हटाने के लिए एक वक्त तो जाएगा ना सर? सॉरी सो सर। ओके, सब जो आपके क्वेश्चंस थे उसका आंसर मैं ये एक स्लाइड में आप अगर देख पा रहे हैं तो वो मैं बताता हूं। आई विल रीड आउट द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट में है वो अभी फाइनल हो गया है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट इट विल बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, दैट इट विल बी पास्ड। देयर इज नो डाउट ऑन इट। वी डोंट हैव अ चॉइस। Okay, so that is where I'm coming from. I will not get into anything of the judiciary or the executive powers or the political thing. This is mainly in terms of our education. We are all educationists. I will focus only on answering this from the educationist or the education point of view. So the vision states that the National Education Policy 2019 envisions, so 2019 का भी 2020 हो जाएगा, but this is what is there in the draft document, envisions an India-centered education system that contributes directly to transforming our nation as a country, our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. I want you to focus on these two words, sir, equitable to all. Usme, I think we have answered all the questions what you asked in terms of reservation, in terms of any special requirement that is needed. Yeah. Equitable in the sense equal. All, yani all. Sir, this is in line with the Constitution of India, sir. Everything else that happened after the Constitution of India came in were all not in line, not in exactly in line with what has been defined in the Constitution of India, which talks about equity, which talks about no discrimination. So when I have no discrimination, I will not have anything to discriminate, whether by caste, creed, religion, culture, gender. ये सब as part of the preamble of our constitution, sir. And the preamble prior to the emergency is what our constitution is, what we need to refer on, and that talks about equality to all. And that's exactly what the mission of this particular education policy is. The flaws of yesteryears have to be corrected and we have to go forward. Probably the flaws of yesteryears were good 20 years back, 25 years back, 10 years back. They're not good now. So I have to change. We have to change because the world is changing. And if I'm not part of the world, I will be left out. And who's going to be left out? Not you and me. You and me will be dead after probably 20, 30, 40, 50 years. But what about our children? What about the next future generation? This is for that. हरीश सर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने जवाब दिया। सर शुक्रिया। थैंक यू सर, Thank you sir, thank you Atul sir. Yogita ji is there. She wants to Yes. ask something. Yeah.
Yes, Hello, madam. sir. My name is Yogita, and very much thank you for this session, because it is really, this new education policy is going to be really beneficial to all the kids, and to the future of our country. It is very important, and we all know that only the survival of the fittest, that is Absolutely. the theory which we have been studying, and Absolutely. only the person who is in line with today's global requirement, he is only going to survive in this world. Sir, I would like to ask you one question. We have now, various schools have various different boards, right? We have CBSE, ICSE, SSE. So is this all going to remain the same, or all the schools are having to be will have the same board henceforth? Okay, So would like to I would like you to answer this for me. sure. Yeah. So the boards will remain for the time being. We cannot change everything all of a sudden. It has to be a gradual process, step by step, one step at a time. देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो, it is going to be like an evolution which will happen like a small plant which is growing into a tree. All of a sudden revolution हुआ तो problem होता है. So keeping that in mind, whatever changes have to be made will be made in a slow and steady manner. These boards will remain. What will change is the way the learning environments are provided, the way the learning aids are given, the way the students are told to learn in line with what has already been documented in the policy. So, state boards, to a large extent for the last 10-15 years, we have been talking that all state boards will be converted to CBSE. हुआ है? नहीं हुआ है. होने वाला है? शायद. Yeah, state boards will be better than CBSE sometimes. We never know. So there is always a give and take. So what is best will get amalgamated. Best practices will be given for everybody to implement. Not that CBSE is the best, or not that UP State Board is the best. No, each one of them have their own good things that they have been implementing for years, and they are seeing good results. They are seeing good outcomes. So, for example, if you think of, most of the IAS and IPS officers are coming from majorly 2 states in the north. साउथ से ज्यादा आते नहीं है, महाराष्ट्र से तो ज्यादा आते ही नहीं है. ऐसा क्यों? शायद उनके एजुकेशन सिस्टम में या उनके कल्चरल सिस्टम में कुछ ऐसा है जो उनको प्रेरित करता है और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि जो भी आईएएस ऑफिसर है वो यूपी बिहार से ही ज्यादा है, हमारे यहाँ से क्यों नहीं है? शायद all that there is some good practice that is happening there. Why can't we implement it here? Now probably here there are a lot of skills which are needed for joining the military because India is here. Probably okay, ये उधर उनको देंगे, वहां से भी कुछ होगा. South में everybody is into probably research and development and going more into IT. Why can't it happen in the state of Orissa? Why can't it happen in the state of Rajasthan? So there is cross pollination that will happen. So next 5 years are going to be exciting times for all of us. It is going to be really a learning for all of us, at the same time implementing it for our good, for the children's good, and for everybody's benefit. Sir, is the right time ये टाइम पे जहाँ पे गुजर रही, वो दौर से गुजर रहे हैं, उस टाइम पे इस तरह की पॉलिसी का अनाउंसमेंट आपको ऐसा नहीं लगता कि मुद्दों से हटाना और हम कहीं सर लेट, वैसे देखा गया तो लेट हो गए सर. हाँ, तो ये सर ये तो पहले ही कर देना चाहिए था. पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया. सर ये बोलना किस हद तक सही है सर, आप खुद भी समझ सकते हो. 2014 से पार्टी रूलिंग में आई थी. ऑलरेडी 2019 के अंदर पॉलिसी पूरी तरह से ड्राफ्ट हो चुकी थी. सर अभी 2020 में, वो भी ऐसे टाइम पे, हो सकता 2 महीने के बाद भी हम लोग अनाउंस कर सकते थे ना, जब अगर पूरा नॉर्मल होता तो. सर कुछ ऐसा नहीं लगता है सर, ये पॉलिसी पूरी रीड आउट करने के बाद के राइट टाइम पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? और सर मुझे जहाँ तक का लगता है, आपका जो लास्ट आंसर था सर, मुझे ऐसा लगता है ना सर, कहीं ना कहीं बिग इंडस्ट्रीज टाइकॉन जो है, इन लोगों को काफ़ी स्पेस मिलेगा बड़ी इंटरनेशनल स्कूल्स डालने का, उनको फंडिंग
100 यूनिवर्सिटीज आने वाली है, तो डेफिनेटली सर एफआईएस का पैसा आएगा, नेता उसके अंदर जुड़े रहेंगे। और सर मतलब हम लोगों को कम चांसेस है, अगर हम लोगों में से किसी की स्कूल है तो डेफिनेटली उनको ग्रेडिंग दी जाएगी, और अगर वो नॉन परफॉर्मर उस तरह के नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली उनको आने वाले 15 साल के अंदर फिनिश कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें सर जो दिखाई गई है। अच्छा सर, इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट अब तक का जो है वेबसाइट पे डाला नहीं गया है सर, ऐसा क्यों सर? मीडिया को कुछ बताया गया है, सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं, कोई लोग इस पॉली के क्रिटिक वे के अंदर कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, डिबेट नहीं कर रहा, सर ऐसा क्यों सर? सर डिबेट होगा जब लेजिस्लेशन बैठेगा इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डिबेट, so we don't have to worry about it. It is not that the documents are not available. All documents are available online. Only when it is passed as a law you will get a legal document. So वो बात का प्रोसेस है, अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं है। If you're talking about foreign direct investments, let me give you an analogy, sir. जब मारुति आया 1980s में इंडिया में, मारुति कार, वहां तब लगा कि जो फिएट और एम्बेसडर है वो निकल जाएगा। सर एम्बेसडर बिकेम अ ग्लोबल ब्रांड आफ्टर मारुति केम इनटू इंडिया। फिएट एनीवे इंडिया का नहीं था, दैट्स एन इटालियन थिंग, बट या ओके। व्हेन वी ओपनड अप द मार्केट इन 1990, लिटिल बिफोर दैट, वी हैड बजाज एंड देन वी हैड हीरो होंडा। वी ऑल थॉट बजाज विल बी क्लोज्ड डाउन, हीरो होंडा विल गो बैंकरप्ट। कुछ हुआ नहीं हुआ। सर ओनली व्हेन वी हैव कंपटीशन वी विल स्ट्राइव। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल स्कूल्स आने दो ना, उसमें डरने की बात नहीं है। वी विल कॉम्पीट विद देम, वी विल बीट देम डाउन, बिकॉज इफ यू सी द विजन, आई एम स्टिल ओपनिंग इट अप, envision as India centered education system, foreign universities, foreign schools, foreign collaborations will be never be able to bring in the India centered education system, sir. They would bring in all high fly, जैसे अभी कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को सेकंड और थर्ड में। जब तक बच्चे 10th पास करके डिग्री जाएंगे तब कोडिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटो कोडिंग रहेगा, रोबोट सब कुछ कर लेंगे। कोडिंग की क्या जरूरत है? कोडिंग के लिए जो जरूरत है वो दिमाग की जरूरत है, दिमाग के सोचने के तरीके से मतलब है। अगर मेरे दिमाग के तरीके को मैंने बदला नहीं, अगर उसको मैंने अलाइन नहीं किया, उसको मैंने अप्लाई नहीं किया, तो कुछ फायदा नहीं है। बट इंडिया सेंटर्ड, फॉर एग्जाम्पल आज योगा वर्ल्ड रिनाउंड हो गया है, नहीं तो अमेरिका बैठी थी योगा को पेटेंट करने में। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, जो भी इंडिया का है, उसको बाहर वाले लोग पेटेंट करने गए थे। इंडिया खड़ी होके बोली नहीं ये हमारा है, तो वो पेटेंट हमारा होना चाहिए, तभी जाके पूरी दुनिया हमें सुन रही है। हल्दी, उसको यूएस पेटेंट करने जा रही थी सर। वो उनको पता भी था कि क्या है हल्दी और उसके गुणधर्म। हल्दी के वजह से हम बचे हैं कोरोना वायरस से, वो किसी को पता नहीं है ज्यादा। दैट इज इंडिया सेंटर्ड। सो डरने की कोई बात नहीं है सर, आने हैं तो आने दो। अरे कितने आए कितने चले गए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो हम फर्म है, जो हम करना है, जो हमें करना है, अगर सही तरीके से करेंगे तो कुछ सोचने की आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। Atul sir, good morning. Yes, good morning sir. I would like to mention those who are present here. I think this session is for regarding the discussion of the what is NEP. लेकिन उसके पीछे लेजिस्लेचर किसको बेनिफिट दे रहा है, किसको बेनिफिट मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, दैट इज नॉट आवर आउटलुक, बिकॉज पेरेंट्स आर हियर। यहाँ बिजनेसमैन नहीं बैठे हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट प्रोफेसर आरिफ ऑल्सो, बिकॉज मैं देख रहा हूँ आधे घंटे में 50% पेरेंट्स काम हो गए हैं। सो वी शुड फोकस ऑन व्हाई NEP इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। बच्चों को उसमें क्या करना है, बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेशन में हैं। हर पॉलिसी के पीछे बेनिफिट्स होते हैं, किसी ना किसी को बेनिफिट्स देते हैं। अगर ऐसे हर पॉलिसी लोगों के लिए हम डिस्कस करेंगे तो फिर सेशन आउट ऑफ द ट्रैक हो रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग। तो माय पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट अदर्स आल्सो, NEP कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे चलेगा, एग्जाम कैसे होंगे, बच्चों का इंप्रूवमेंट क्या होगा, मोस्टली तो अतुल सर ने डिस्कस किया ही है। उसके अलावा भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होगा तो प्लीज डिस्कस करो, प्लीज। सुरेश सर, थैंक यू। अतुल सर,
We will take last two questions because already we are out of the time. Yes, sir, it will be good to give a chance of parents to ask a single question at a time, so that many of parents can ask many questions. Yeah, two questions. I have two questions. Aarti Bhosle ji is there. She want to ask something. Aarti Bhosle ji, you can unmute yourself. And one more, Vinayak Chaudhary. Afterward, we will end the session. Already we are out of the time. Yeah. Yes, sir. Yeah. Actually, I don't have any question, but Atul sir, thank you very much for giving this good insight to us. And rightly said by the parent that this was only a session to be told or given the insight what is NEP to 2020, not aligned to any other aspects of political aspects over here. Just make aware. This is an awareness session, and I am happy that the team has arranged this. And thank you to Yogita for sending me this message and making me a part of it. I have also actually shared this YouTube link with many of my. I'm a teacher, and I've shared it with many of my parents so that they can attend it and they can understand what it is, because everyone is totally blank. Reading and understanding in this forum is really very nice. Thank you very much, Atul sir. Thank you very much. Thank you so much, madam, for the kind words, and also look forward to you being an active participant in getting this implemented for the benefit of the whole education community. Yes, sir. I would like to connect with you personally also. I'm also Anytime. from Pune, so would like to connect with you personally. Sometime later, I'll connect with you. Wonderful, wonderful. Anytime. Thank you so much. Thank you, ma'am. ऑर्गेनाइजर और अतुल सर, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी रहेगी तो सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं। नो, बुरी नहीं लगी सर, ये डिस्कशन था। आई थिंक द पॉइंट वाज दैट it's a different topic for discussion. Probably we will have a different session for that. ओके सर, एक्चुअली मेरा जो इंटेंशन था ना सर, कुछ चीज़ें जो हाईलाइट नहीं हो पाती है टाइम लिमिट की वजह से, आप जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा और हर गली में तो मिलते नहीं है सर, इनके सामने अगर बात रखी जाएगी तो डेफिनेटली वो हाईलाइट होंगे। किसी के सेशन को डिस्टर्ब करना या कुछ और ये करना, नहीं, I will talk with sir and we will arrange this session for CCPA. Sir, Arif sir is from the CCPA Coaching Class Association Group. Sure. So I will talk with the president of CCPA and we will keep one session of Atul sir for CCPA. There you can ask your all the questions. But this session is only for the parents and teacher and what is in NEP. Okay. What is it for all of us so that we know and we are aware. Okay, Arif sir, no problem. Yeah. The last question, the last question from the Vinayak Chaudhary. Vinayak, are you available? Vinayak? Okay, Vinayak is not there. I hope so, sir. You clear all the points. Generally, आपने जैसे बताया सर कि the now whatever the NEP, it is only for the learning center. हमें सिर्फ पढ़ना है, marks automatically आएंगे. Means your और concept should be clear. बच्चों के concept clear होनी चाहिए. They should be multilingual. बहुत सारी languages आनी चाहिए बच्चों को. Language आते जाएंगे, maths आते जाएंगे, automatically marks मिलते जाएंगे. So sir, it's superb knowledge sharing session. ये Sunday morning आपने हमारे बहुत सारे doubts clear कर दिए and जैसे आपने बहुत सारे continuously हम लोग आपके touch में रहेंगे and we will arrange all such sessions for parents and students. So parents and students, please connect with us. In future, we will arrange lot of such sessions for you. Atul sir? Yes, definitely. Yeah. Okay. Definitely, we will do. So already we are out of the time. हम लोग आधे घंटा और extra हो चुके हैं. So formally vote of thanks. I will request Rahul sir of Nalanda Group Tuition. He will give formal vote of thanks and then we will end the session. Thank you. Thank you, Mahesh sir, to giving me such a great opportunity. And first of all, सबसे पहले मैं अतुल सर जो आज ज्वाइन हुए हमको ये NEP के विषय में बताने के लिए, सबसे पहले अपने स्पीकर गेस्ट अतुल सर का मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ उन्हें. थैंक यू सर. एंड ये टाइम निकाल करके जितने भी स्पीकर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जितने भी ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला. अभी अतुल सर ने जो हमें NEP के विषय में बात की उसमें से जो पॉइंट्स कलेक्ट हुए, बिफोर एंडिंग जस्ट अ ग्लांस के लिए
मैं 2 मिनट बात करता हूँ। अतुल सर ने बताया कि अभी तक जो शिक्षा नीति NEP आई अपने वर्ल्ड इंडिया में 3 अभी तक शिक्षा नीति आ चुकी। दैट वाज फर्स्ट 1968, 1986, देन अभी 2020 में। ये पूरा ड्राफ्ट मई 2019 को बना। पूरा बिल, पूरी पॉलिसी 3 to 400 पेजेस की है, बट 400 पेजेस की पॉलिसी को इतने कम टाइम में अतुल सर ने इतने अच्छे से ब्रीफली सबके सामने रखा। दैट वाज फैंटास्टिक, वेरी वेल। सर ने जो पॉइंट्स बताए उसमें से NEP में से और Rahul, NEP के Rahul, sorry to interrupt. One more question, sir, of Sarika ji. Yes. And afterward, Rahul, you just start. She asked ki up to 5th standard, mother tongue should be the medium of instruction. So how it possible? Like Maharashtra, lot of people are there from different region. Just Yes. clarify that one, and then we will end the session. So, okay. So in the presentations, I was talking about not just language, it was languages. Yeah. So foundational years, we are going to give them languages. The medium of instruction has to be in mother tongue, which is the best to happen because that is the most effective way any one of us can learn. But that doesn't mean I will not learn other languages. I will definitely learn other languages. For a cosmopolitan population, which is in India basically. So my whole education has happened in Karnataka, and now I am here, and my children are sitting here. They don't know, probably after 2 years or 3 years, I'll go back to Karnataka. So what will happen? So all of these questions are there. So to be on the safer side, I will choose the medium of instruction as English, even in the earlier years. But the medium of instruction and medium of making them learn and understand would happen at home in the mother tongue. So that's the way of looking at it. If a person coming in from Bihar to Mumbai, if he is put into a Marathi medium school, then the learning will never happen. So these are all small things which have to be looked into in a holistic manner rather than just as a language. Language is just a means of imparting the education, and language has nothing to do with the state or the country. It is to see that there is effective education that happens rather than me fighting that मैं हिंदी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं तमिल हूँ, नहीं. So this will get sorted out. But for the time being, what I know is that the policy talks about 3 languages. So you can pick and choose your medium of instruction. But for the first 5 years, what they have said is effective learning will happen the best when it is in the mother tongue. Thank So you, the sir. implementation challenges would be there, which will get eased out, which will get sorted out probably in the next month or 2. But there is nothing major to worry about it. We would definitely have more focus on languages, and which is needed, because unless and until I don't learn the great prose and poetry of all our Indian languages, I will not be able to appreciate the culture. I will not be able to appreciate our past. I will not be able to appreciate the Indianness, and I will not be able to feel great about what I am, where I belong to. So it's very important. Thank you, sir. I hope you get your answer, sir. Can we take 1 or 2 questions more? Harish sir want to ask. Please, sir, go ahead. Rahul sir, stop your screen sharing. It's not visible actually. Yes, sir. Harish sir, if you want to ask something? No, sir. Yeah, some of the parents, if any parents, if they want to ask anything, just unmute yourself. We will take last 2 questions. Parents question पूछना चाहते हैं sir. Yeah, just unmute yourself, parents, and ask. I hope, sir, clear all the points. I think so. Harish sir, almost Harish sir clear all the points. Whatever they ask now. Yes, sir. Yeah, I think so. No questions. Rahul sir, just give out of thanks and just. Yeah. Yes, sir. Okay. So, सर ने जो पॉइंट्स बताए NEP के लिए, उसमें सर ने बताया बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई, उसके अलावा बाद में सर ने बताया मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन भी दिया सर ने बताया कि स्कूल एजुकेशन में 6th से लेकर के हम लोग बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर कोडिंग भी देंगे, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी।
सर ने ये भी बताया कि रिपोर्ट कार्ड जो है 360 डिग्री असेसमेंट होगा। दैट मीन्स बच्चों का पूरा नॉलेज सारी चीज़ों का असेसमेंट करके रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होगा। Entrance exam for college admission. Sometimes students, because of they were not enough score good marks in 12th standard में अच्छे मार्क्स नहीं आए, so कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का भी सिस्टम है। इसमें ग्रेजुएशन का 4 इयर्स में सिस्टम ऐसा कर दिया गया है, सर ने जो बताया कि अगर फर्स्ट ईयर में बच्चा ग्रेजुएशन से बाहर होता है देन ही विल गेट सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में ही विल गेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर में बाहर होता है बैचलर डिग्री, फोर्थ ईयर में जाता है तो ही विल गेट द रिसर्च डिग्री। इसके साथ सर ने ये भी बताया कि ये जो नेशनल हायर बिल है ये 2021-22 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से भी चालू हो जाएगा। एंड ये अभी बिल है, ये अभी डिस्कस भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ पार्लियामेंट में। तो इसमें जो भी देश के जाने माने वैज्ञानिक जिन्होंने कस्तूरी रंजन जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, सब कुछ नियर अबाउट 2 लाख सबको लोगों का विप्स लेकर के प्रिपेयर किया गया। बट फिर भी इसके विषय में सब लोग, हम टीचर्स को सबका काम है कि हम लोग सब लोग मिल करके जितनी ज़्यादा जानकारी लेंगे, जितना ज़्यादा आसानी से इसे लाएंगे, उतना अच्छे से ये लोगों को समझेगा। स्टिल डिबेट का है तो डिबेट वो हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई से अभी न्यू चीज़ें आई, तो मैं बच्चों के लिए 2 वर्ड्स बोल करके सबको थैंक यू बोलता हूँ। बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न हो। अब बच्चों के हिसाब से, बच्चों के पैशन के हिसाब से, बच्चों की पढ़ाई उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई है। ये जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को जहाँ चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं। सो इसके लिए जितने भी यहाँ पर टीचर्स, प्रिंसिपल सब ज्वाइन हुए, उन्होंने टाइम निकाला, पेरेंट्स, उसका मैं इतने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। महेश सर और हरीश सर, अदिति, एजुकेयर एंड वीएम ट्यूटोरियल्स एंड अतुल सर, आप सभी लोगों ने ये कंडक्ट किया और इतना टाइम दिया, उसके लिए भी मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Thank you Atul Thank sir. you so much. Thank you very much. Yeah. Parents, teacher, and students, keep touch with us. We will arrange such free sessions for you also in future. So stay home, stay safe, and stay in touch with us. Thank you. In Thank that you, group, WhatsApp group में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। You will get the all the details and information